वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग बिट्स। आज हम लोग बनाएंगे नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, उसके बाद लेंगे चीनी जो शुगर, और उसके बाद लेंगे मिल्क, फिर उसके बाद हम लेंगे गोल्डन रेजिन, फिर लेंगे ब्लैक रेजिन। नारियल लड्डू बनाने के लिए हम नारियल लिए थे हम लोग, तो 2 कप नारियल लेंगे। नारियल को हम पहले भूनेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम जो है स्लो हो, नहीं तो आपका जो है सो लड्डू जल जाएगा। सो बस थोड़ा सा रोस्ट होगा, जिसमें आप ज़्यादा जो है कलर नहीं आना चाहिए। तो ये लड्डू ऑलमोस्ट हमने 2 मिनट्स तक रोस्ट किया है। तो 2 मिनट्स में जस्ट आप देख सकते हैं कि कैसा उसका कलर आ गया, लाइट वाइट एंड ब्राउन कलर। सो इट विल बी अ वेरी गुड। बोले फिर हम इसमें डालेंगे दूध, So the simple recipe is 2 cup designated coconut and 2 cup is the fresh milk. अभी हम गैस फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि वो 1 या 2 मिनट तक थोड़ा सा मिल्क जो है अब्जॉर्व हो, एंड आफ्टर देन वी विल पुट द शुगर. So after boiling the 1 minute, we are just ready to put the sugar. Sugar also is the same, like 1 cup of the sugar. So it's equal to 1 cup is coming is 250 gram. So if you want to be weight, you can be use like 250 gram of the sugar, 500 gram of the desiccated coconut, and you can be use some 500 ml of the milk. So we need to be cook some 4 to 5 minutes again. So it will come the good consistency, and as you know, after put the sugar, it will be a more liquidy. So on a high heat only we can be reduced. So it's already complete the 3 minutes, but after that until dry we need to be cooked, because if you want to make a laddu, so obviously after dry only we can make the laddu. So let's see, this is sugar is getting dry, it is reducing the water. Maybe it will take 5 to 6 minutes more. So now it's ready. So we need to put on the last 1/4 cup of golden resin and also black resin also, and 1/4 cup is black resin also. Then okay, now we need to mix the fruits, dry fruits. And let's how it's looking, that's very good, like the golden resins, blacks and everything, it will give you the good color. So after this one we will just keep some 10 minutes for a resting, or we can be put 10 minutes in the side the freezer. Now it's a very nice smell is coming also. Wow, really. So it's like we can't able to wait until 10 minutes to be eat again. ये निकाल दिया। अभी ये बहुत ही गर्म है, तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो एटलीस्ट 3 घंटे तक आपको बाहर रखना पड़ेगा। और अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसको चिलर में स्टोर कर सकते हैं नियर अबाउट 10 to 12 मिनट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने फ्रिज से इसको निकाल दिया क्योंकि हमें जल्दी बनाना था। तो अभी हम इसको, ये पूरा अच्छी तरह से ठोस हो चुका है। सो अभी हम इसको लेके हम बॉल का शेप देंगे अच्छे से। बॉल का शेप देने के बाद ड्राई कोकोनट में इसको डिप करेंगे। आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने लड्डू बना रखा है नारियल के। सो अभी इसका प्लेटिंग करना बाकी है, तभी हम इसको प्लेटिंग करके भी आपको दिखाएंगे। So see how's the looking this one with the very